ज्यादा कानून आजकल जानते हैं, ठीक है, तो आप ही कर लें, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि वकील से थोड़ा मशवरा कर लो। आई एम श्योर शहजाद शौकत साहब से बात करेंगे, वो आपसे कोई फीस नहीं तलब करेंगे। सारे ऑर्डर अपीलेबल हो गए, अब ये इंट्रा कोर्ट अपील तो में अब हम अपने ही कानून को वायलेट करने चल पड़े तो आप ही लोग हम पे तनकीद शुरू कर देंगे। हमें तनकीद से इतराज नहीं है, मगर कानून की वायलेशन से बिल्कुल इतराज है। तो actually I was expecting some applications, no application has coming forward. My lord, with your permission. आप भी आ गए। I don't know. सर मेरी रिक्वेस्ट ये, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो कोई जल्दी नहीं है। आई डोंट नो क्यों हमारे इदारे इतनी जल्दी में है कि ये कानून आपस में बात करें ना, आपके इदारे आपकी बस सर 7 डेज का, अगर हमें इलेक्शन के बाद तक के मैटर पेंड कर दें ये पूरा प्रोसेस। देखिए आई थिंक ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन के बाद तकरीर ना करें प्लीज। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। हम ये हम फोरम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आकर के कल का अखबार में खबर लग जाए। आप लिख कर दे दीजिए तो हम इनसे पूछ भी सकते हैं, जिससे पूछना उससे पूछ लेंगे। सिस्टम तो हम बनाए ना, सही तरह से सिस्टम बने। थैंक यू। तो अगर आप इनको परसुएट करें सदर साहब को, वो हमें कोई जल्दी हम समझे तो वो कयूम सिद्दीकी साहब का वाला केस और वो हैदर साहब का, वही हैदर, अच्छा आए हुए आपको टाइम मिल रहा है ना, 184 में कन्वर्ट कर दो इसको। अगर वो फाइल भी होगा तो हमें कमेटी के पास जाती है। हम भी तो हम चाह रहे थे सिर्फ नोटिस की हद तक अगर वो कर रहे हैं ना, वो तो अभी उन्होंने रोक दिया ना मामले को। सर आज भी बुलाया गया वो भी देख रहे हैं। अच्छा अब ये हमें एक तरफ से बता दें, कानून पे अमल करेंगे ना, सिर्फ ये बता दें। सर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम कब कह रहे हैं। सर इलेक्शन इज अ क्रूशियल मोमेंट, मीडिया को सारे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है सर इसमें। फिर आप सिर्फ 7 दिन की बात है। वही साहब, आप यू आर हियर, इट्स गुड, so we can take up your petition and the other 2 petitions, and we can, I don't know, whenever they file it will immediately go to the committee. The committee generally meets on a Thursday unless there is some reason why judges are not available. So because these 3 judges are not the committee, committees are different, the 3 senior judges are the committee. My lord, my petition actually just merely seeks a balancing of the constitutional rights. It talks about how there is already a Supreme Court. No, what do you want us to do? That's, I mean, I've read your petition. It's very good, but what sort of order would you want us to pass? My lord, I've just, in especially these circumstances, the only thing that we are pressing is कि a code of conduct, sir, Supreme Court का ordered ही approved a code of conduct बना था for broadcast media. अब sir, Article 19 जो है, it clearly covers content. It doesn't cover one medium to the exclusion of other mediums. It talks about speech overall. But what we have right now is that broadcast media is regulated completely differently. So whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो broadcast media पे आप नहीं कह सकते। What do you want us to do? The code of like it happened last time, perhaps a direction can be given कि stakeholders बैठ जाएं federal government के साथ और code of conduct जो already बना हुआ है और एक सर कानून भी बनाया था उन्होंने, एक unit which law the code of conduct will be made? जी सर, code of can the Supreme Court pass such an order? सर पहले भी कैसे ये नहीं, आपका ऑर्डर ये नहीं होगा कि लेजिस्लेट मदद कीजिए ना। पेमरा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो मेरे ख्याल है चैलेंज हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा ठीक है इसको मिलके, इसका तो कोड ऑफ कंडक्ट पेमरा का 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत बना हुआ है। ठीक है सर, बट सर तो पुरानी चीज है, उसके अंदर इतराजात हुए थे मीडिया को, उस पर वो सिर्फ चैलेंज चल रहा था कि हुआ क्या आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिल बैठ के आप कोई कर ले, तो वो एक सेल्फ इम्पोज जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वो बनाए गए। I'm seeking a level playing field. All I'm really saying is कि सर उस वक्त अगर equally regulation होती, या I won't even call it regulation because it's also protection of speech. Really, it is protection of speech. Sir, I'm asking you a different question. You are arguing your case. Sir, once again. Sir, I am saying that such a direction can be given because it's enforcement of constitutional rights. What order should be passed? Just a simple question. You are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to enforce Article 19. Fine. Wishes, if wishes can be, what do they say?
Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. Never, you should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce Like we constitutional can rights. request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. Sir, अगर ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार No, होंगे। देखिए, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules. There's no law है। एक सेकंड ये बात कर रहे हैं ना। जी सर। सर बात ये enforcement of constitutional right के लिए certainly कैमरा है, can be उसको issued. उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना. इफ देयर सम लॉ दैट शुड बी रेगुलेटेड और शुड रेगुलेट दी सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है। डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना. उसके petition में सारे ऊपर mention कोर्सिव है। एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना. आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब, ये तो बताइए आप. My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity, and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है. या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them, and that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक that मीडिया specificity. या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज सर, उसमें जैसे पब्लिकेशन removal- का मतलब इंटरनेट भी है उसके. सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की. पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, सो देयर इज दैट रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स ऑफ 2020. अच्छा ये पेज 15 है पिटिशन की. दिस इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 27 ऑफ 2022. नहीं, वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं? सर ये है रिमूवल एंड जब ब्लॉकिंग. आपकी जो फर्स्ट प्रेयर है ना, My lord. directs the federal government to prepare and implement specific code of conduct. And tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. My lord. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Yes. Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law My lord, my or in the humble- Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do we do? My lord, we my issue them a contempt notice on what My lord, basis? On a wish? My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions but For that, inherently the limits legislation is speech. required. आप थोड़ा हाँ सॉरी सो आर्टिकल सर अभी तो सर आप जिस तरह आपने बात की, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this एक case. सेकंड My lord, with your permission. एक सेकंड मती साहब ये बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना. हैदर वहीद साहब देखिए, अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटिशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है नहीं सर, ना. मैं कह रहा था- तो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटिशन देखिए पेंडिंग है 22 से 2022 से. जी सर. ठीक है, हम 24 में आ गए हैं. जी. जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको कोई मना कर रहा है. हम पूछ रहे हैं कि अदालत क्या कर सकती है, आपकी मदद चलें, ये भी कर लें. हम मदद भी करना चाहते हैं, हम करें कैसे? ये बताएं हम किस किस्म का ऑर्डर पास करें. My lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the एक cognizance. बताएं ना आपने. अच्छा, इन्फोर्समेंट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19, ये भी आप देखिए ऐसे गोल्ड ऐसे ना कर देना. आर्टिकल 19 में सर, बहुत कुछ लिखा हुआ मैं क्या है. रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ रीड आर्टिकल 19. My lord. ये आपने लगाई है कॉपी, आपको एक मिनट से मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इन द मीनवाइल मैं पढ़ लूँ. ये रिमूवर एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2021. My lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. इसे किताब में पेमरा लॉज के ये आप बता जी, दें सर. क्या सर, कौन सी आर्टिकल 19 में एक पार्ट है जो कि इजाजत देता है, दूसरा पार्ट है जिसमें ममानियत है. Subject आप to ममानियत reason. कर रहे हैं या इजाजत वाली बात कर रहे सर मैं कह रहा हूँ हैं? आर्टिकल आप कह नहीं, कानून क्या कह रहे हैं? My lord, कानून ये कहता आप है. पढ़ लीजिए प्लीज. जी सर, मैं आर्टिकल आजकल फैशन हो गया बगैर पढ़े चीजें आर्ग्यू करो.
भाई देखिए आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं, एक पहलू कहता है सबको इजाजत है, फिर उसके बाद वो जाके रुकावट डाल देता है। Subject to reasonable restrictions. I'll read Article 19. हाँ तो अब हमें आप कह रहे आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें तो कौन सा पहलू, दोनों पहलू करें, एक मेरा कहना ये कि आप जी मैं पढ़ लीजिए देता ना। हूं सबसे पहले। Freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or the defense. एक सेकेंड, तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, पहला रुकावट, दूसरा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस। चलिए इसको एक ही हम तस्वुर कर लेते हैं, दो or any part thereof, friendly relations. ये हो गया, with तीसरा foreign रुकावट आ गई, states, तीसरी रुकावट आ गई, public order, ये चौथी रुकावट आ गई, Contempt of court. decency or morality, इसको पांचवी रुकावट कर लें, or in relation to contempt of court, the छठी commission रुकावट। of or incitement to an offense. तो सात रुकावटें आ गई। आईन ने बनाई है, जरा ये हम वजाहत करते चलें, हमने नहीं बनाई है। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब कह रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19, तो अब आप बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात कर रहे हैं, जो दो राइट्स दी गई हैं, फिर इसमें ये आ गए रिस्ट्रिक्शंस। तो आप ये सिर्फ ये बात करना कि आर्टिकल 19 की इन्फोर्समेंट से मुराद आपकी क्या है? My lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media but not to digital media. And We agree. What do we do? आप तो ये चाहते हैं कि इसको रेगुलेट कर लेना, यू वांट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो यूट्यूब है, इसको रेगुलेट किया जाए, ये आप कह रहे हैं ना। इसको मैं कह रहा हूं जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड है, उसको जो है डायरेक्ट किया जाए, स्टेक होल्डर्स बैठ के वो कोड ऑफ अब कॉन्डक्ट। आपने जो बात कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव, चलिए कानून की बातें कर लेते हैं ना। नहीं वो नहीं, आप सिर्फ ये बताइए, you're a senior constitutional lawyer. Now, what do? We agree with you. Let's even go that far. How do we do it? After all, everything must be done in a particular way. Yes, my lord, to enforce constitutional rights of Article 19 and 25, and in keeping with balancing of constitutional rights, a direction can be given to the federal government. It is after all an executive. You're not asking for legislature to make law. A direction can be given to the federal government that made the first code in any case. It was the federal government. One second, please argue this case. I don't know what that case is or what the first case is. Please argue this case. Okay, let's go step by step. Okay, let's assume this direction is given. Second assumption is, let's assume federal government does what? It sits with stakeholders and makes a code of Stakeholder is conduct. who? It can be journalists, lawyers, they can decide. Sir. Please देखिए ना, don't just say. आपका डायरेक्शन तो सर फेडरल आप गवर्नमेंट ये देखिए ना, ये स्टेक होल्डर्स वो अपने चार दोस्तों को बिठा लेंगे अपने साथ, हाँ जी ये स्टेक होल्डर्स हैं। अब आप ये ऐसी बातें जब आप करें, कोई चीज लाए अदालत, तो सोच समझ के करें ना कि ये अब बता दीजिए वो क्या हम करें आगे। पार्लियामेंट हैज टू मेक द लॉ। अब तो फिर वो पार्लियामेंट कलम पे कह रही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियार इस्तेमाल कर लिए, ये हमारा काम है। तो ये दरख्वास्त आप अगर सारे मेंबरान पार्लियामेंट को भी आने वाली है, उनको भेज दीजिए, शायद तो बना दें आपके लिए कानून, हमें नहीं पता। सर मैं लेजिस्लेचर के लिए डायरेक्शन नहीं मांग रहा, मैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि वो कोर्ट उन्होंने पहले भी ब्रॉडकास्ट का बनाया, डिजिटल का भी बना दे। के लिए कोई सपोर्ट ऑफ लॉ तो चाहिए ना। अगर अटॉर्नी जनरल ने बात कही तो नहीं है, अगर उन्होंने कह दी हम नहीं करते या हम आइन के ताबे हैं और हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है। सर पीटीए एक्ट और पीका में बन सकते हैं, ये अंडर रूल्स बनाने की जहाँ पावर है, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी जर्नलिस्ट को जो है जिस तरह से गैग कर रही है। एक सेकंड आपको सुनेंगे ना जरा इनकी बात। नहीं आप लोग तशरीफ रखें 2 मिनट, हम जरा कयूम साहब जरा आप दोनों तशरीफ रखें, एक एक को सुनेंगे आप, कोई फिक्र ना करें, कोई नहीं जाएगा जिसको नहीं सुने।